Good afternoon, everybody. On behalf of the Academy, I extend warm welcome to all the participants for today's webinar on traffic suspense. To take up the session, we have Sri K.K. Subramani, AFA Training, Sitara. He's the person who introduces all the faculty. Today, he'll be taking up the session for you all. Sir, it's over to you, sir, for the session. Thank you, Benner. Good afternoon to all participants. Good afternoon to all participants. Am I audible, please? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes. Okay. Good afternoon to all participants. In continuation of the earlier topic of traffic book, today we will extend it a little further. So the presentation today will be on traffic suspense. So we plan to carry out this traffic suspense session in two parts. First will be a theoretical what is traffic suspense, how it comes from, where it comes from. We'll discuss about the subject. Second aspect will be about the MCQ on traffic suspense. So two things will take one after the other. Now we start with the traffic suspense. I will also tell in Hindi for our Hindi participants from the other side, so that we can have some balance. So, called Yatayat Sandehi Kata. This is also called Yatayat Sandehi Kata. Now over to the first slide. What we will do before going, we will define what is traffic suspense. Traffic suspense, first to know what from where this traffic suspense comes from. So normally we know the traffic earnings comprises of passenger earnings. Mane yatri ki kamai. Other coaching means anya coaching. Coaching earning means the earning of both passenger and other coaching की कमाई को coaching earnings बोल के हम उसको बोलेंगे. Next will be goods earnings, that is represented by Y, and sundries will be अन्य, that is Z. If we add these three, इन तीनों को हम मिलाने से हमको we get gross earnings. This gross earning is nothing but कुल कमाई, that is X plus Y plus Z. ये तीनों का जो कमाई होगा उसे कुल कमाई हम कहेंगे. और what is gross traffic? It's सकल यातायात प्राप्तियां. So what will happen at the end of that? If we add suspense to that, मतलब यातायात संदेही खाता, whichever is suspense, if we add to the gross earnings, then we will get the gross traffic receipts. Okay. Okay. Now we move on to the second slide. In this, we will try to define what is traffic suspense. Traffic suspense is nothing but the difference between the gross traffic receipt and the gross earnings. So इसका क्या है? सकल यातायात प्राप्तियां और कुल कमाई की अंतर जो है उसे हम बोलेंगे ट्रैफिक सस्पेंस. मतलब it is called यातायात संदेही खाता. It represent unrealized traffic earnings. इसका मतलब क्या है? जो अप्राप्त यातायात आय जो हमें नहीं मिला उसको this defines that it represents the closing balance of the traffic suspense head. संपत्ति के समय में जो बकाया रहता है उससे हम ट्रैफिक सस्पेंस हेड में ये क्लोजिंग बैलेंस होता है. So it is also a debit balance. This is also called शेष ऋण. This is the traffic suspense definition. ठीक है. Next we will try to know why it comes. ये इसके reason, what are the reasons for this traffic suspense? The reasons is mainly due to non-adherence of codal or extant rule. नियमों का पालन न करने के कारण इसका जो सस्पेंस में जमा होना is one of the reasons. Non-availability of circulars in time. Circulars जो है, जो भी circulars हमारे रेलवे बोर्ड या कमर्शियल ऑफिस जो इशू करेंगे, इसका circulars
पत्र समय में उपलब्ध न होने के कारण ये कुछ गलतियां मतलब ट्रैफिक सस्पेंस में रहने की चांसेस है। वॉल्यूमस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन की बड़ी संख्या, जब लेन देन की बड़ी संख्या होती है तो हमें सस्पेंस में या यातायात संदेही खाता में जमा होने की एक दैट इज वन ऑफ द एक कारण है। स्लैक सुपरविजन, सुस्त पर्यवेक्षण, तो इसका सुपरविजन जो कम होगा तो तभी भी कुछ ना कुछ ओवरलुक होगा कुछ आइटम्स। सो यहाँ का वहाँ होगा, वहाँ का यहाँ होगा, इसमें कुछ गलती हो सकता है, इसकी वजह से वो सस्पेंस में आने की दैट इज ए पॉसिबिलिटी इज देयर। Then ambiguity and complexity of rules. Ambiguity and complexity rules का मतलब क्या है? अनिश्चितता और जटिलता नियम इसके कारण, मतलब थोड़े जो नियम रहेंगे उसको हम बराबर उसको इंटरप्रेट कर नहीं पाएंगे। तो जहां पर रूल क्लियर ना हो उसके वजह से कुछ हमको जमा होने की कुछ प्रॉब्लम होती है। और दूसरा रीजन ये वजह हो सकता है इम्प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न्स। हम किसी भी रिटर्न्स हम करेक्ट रूप से हम तैयार नहीं करेंगे, गलती से तैयार करेंगे तो वहां पर भी हमको ये संदेही खाता बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। नॉन प्रिपेयर्डनेस ऑफ स्टाफ टू हैंडल ट्रैफिक, मतलब क्या है, इसमें जो ट्रैफिक होगा उसको स्टाफ के हिसाब से प्रिपेयर्डनेस, उसको संभालना है। एकदम ज्यादा ट्रैफिक हो गया, स्टाफ में उनके पास दे आर नॉट रेडी वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उनको संभालने के लिए जो मुश्किल होती है, तो वहां पर भी कुछ गलतियां हो सकती है, वो भी जो है संदेही खाता में जमा होने की चांसेस है। लैक ऑफ अपडेटिंग ऑफ नॉलेज, मतलब सही वो अभी समझो किसी माल बुक करने आए उसी के बारे में उनके पास सही ज्ञान का प्राप्त न हो। लैक ऑफ अपडेटिंग नॉलेज, जो नया रूल्स आ गया उसको लागू करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस समय क्या होगा, ये जो है उसकी वजह से ये संदेही यातायात संदेही का सस्पेंस का जो हेड है बढ़ सकता है। सो दीस आर द थिंग्स। नाउ हमने अभी पहला what we have learned is what is how traffic suspense is arrived in the first slide. So it is a combination of passenger other coaching earnings, goods and sundries. This is called the gross earnings. It is कुल कमाई। इसको सस्पेंस हम मिलाएं तो इससे ग्रास ट्रैफिक रिसीट, इसी सकाल यातायात प्राप्ति। And in the second slide we have seen what is the difference, what is the traffic suspense का definition। Definition जो है ये जो है ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट्स और ग्रॉस अर्निंग्स का अंतर जो है उसे हम ट्रैफिक सस्पेंस कहेंगे। सो दिस इज अनरियलाइज्ड ट्रैफिक अर्निंग्स, इट रिप्रेजेंट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ट्रैफिक सस्पेंस हेड, इट इज ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस। सो these are the first two things that we have to remember. And what is the reason that contribute to the traffic suspense will be non-adherence of code extent rules, non-availability of circulars in time, voluminous number of transactions, slack supervision, ambiguity and complexity of rules, improper preparation of returns, non-preparedness of staff to handle traffic, and lack of operating knowledge. ये किसी न किसी एक वजह से हमको this यातायात की संदेही खाता में अकाउंट जाकर जमा होने के चांसेस है। Now we will see उसका कंपोनेंट क्या क्या है। इसके कंपोनेंट ये है कि स्टेशन आउटस्टैंडिंग माने स्टेशन बकाया, अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट, अकाउंट्स ऑफिस में जो बैलेंस शीट बनता है वो एक इसका एक भाग है। कैश इन ट्रांसिट मतलब मार्गस्थ रोकड़, जो है मार्ग में रोकड़ है कैश होगा, जो अकाउंट में नहीं आया तो फिर भी स्टेशन से निकल गया हो, इसके बारे में हम वी विल डिस्कस इन डिटेल। और डिमांड रिकवरी, ये चार जो मिलकर होता है इसे हम कंपोनेंट ऑफ ट्रैफिक सस्पेंस करके कहेंगे। ये माने कि छोटा चैप्टर है लेकिन एक ट्रैफिक सस्पेंस के रूप से दिस इज टॉपिक इज लिटिल इंपॉर्टेंट। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर का क्वेश्चंस जो है लाइकली टू अपीयर इन शॉर्ट नोट्स, या कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन की एक भाग भी हो सकता है कि बी बिट या सी बिट या ए बिट कुछ भी हो सकता है। सो इसके लिए हम इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। सो ट्रैफिक बुक के साथ ये ट्रैफिक सस्पेंस भी कभी-कभी क्वेश्चंस में भी अपने हमको अपने एग्जाम के लिए अगर किए या जो एनडीसी एग्जाम हो उसके लिए भी कुछ भाग बन सकता है। ओके, एक कंपोनेंट्स क्या क्या होता है हमने समझ लिया कि स्टेशन आउटस्टैंडिंग है, स्टेशन बकाया, अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट ये वो भी जो अकाउंट्स ऑफिस में बनती है, कैश इन ट्रांसिट, मार्गस्थ रोकड़ और डिमांड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो ट्रैफिक सस्पेंस रिप्रेजेंट द अर्निंग्स व्हिच इज अक्रूड, उपार्जित जो हमको कमाई है उसका, बट नॉट फिजिकली रियलाइज्ड। उपार्जित कमाई तो अक्रू हो गया लेकिन इसका फिजिकल रियलाइजेशन तो अभी नहीं हुआ, तो किसी न किसी दिन इसका
कमाई में बदलने का आशंका है। तो जब तक हम क्या करेंगे, इसको यातायात सस्पेंस में लगाएंगे, मतलब संदेही खाता में इसे लगाएंगे। सो हम इस कंपोनेंट को वन आफ्टर द अदर वी विल डिस्कस व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स। स्टेशन आउटस्टैंडिंग, पहला जो है स्टेशन आउटस्टैंडिंग, दो तरह के होते हैं, कक्षा ए और क्लास ए और क्लास बी। सो कक्षा ए में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कैश ऑफिस डिसअलाउंस के बारे में। कैश ऑफिस डिसअलाउंस जो बनता है क्या होगा, ये कैश ऑफिस में जब हम स्टेशन से जमा होगा वो किस द्वारा होगा, कैश बैक द्वारा होगा। तो हालांकि ये सिस्टम इज नॉट नाउ स्लोली डिमिनिशिंग बिकॉज banks are coming and collecting the cash and they are directly, stations are also remitting into banks. This is not happening. This is happening on a regular basis and very rarely we make use of the cash back. तो हम कैश बैक में क्या करेंगे, कैश रखेंगे, कैश के साथ क्या रखेंगे, सीआर नोट बनता है। सीआर नोट क्या है, कैश रेमिटेंस नोट। जब भी हम कैश रेमिट करेंगे कैश ऑफिस में, सीआर नोट जो है हमको 3 कॉपी में बनाना पड़ेगा। एक कॉपी जो है, 1 copy will be is the office copy which is kept for record. 2 copies are sent along with the cash back, the cash and also the vouchers that has been exchanged at the station. ये जो voucher होगा, concession vouchers, वो CR note के साथ हम cash office को हम जमा करेंगे। तो वो क्या करेंगे, cash back में रखेंगे। Out of these 2 copies, 1 copy is acknowledged by the cashier and it is sent back to the station. So one is sent to the accounts office along with the vouchers and cash is deposited in the bank by through treasury remittance note. ये treasury remittance note क्या होता है, ये ब्लू कलर में होता है, उसे हम 3 कॉपी में बना करके बैंक में जमा करेंगे और एक कॉपी जो है अकाउंट्स को भेजेंगे और एक जो होगा कैश ऑफिस का कैश कॉपी होगा। दिस इज हाउ द कैश ट्रांजैक्शंस आर remitted into bank through this cash bags. These cash bags daily comes from the certain sections of traffic. It is put in a box. It is called the cash box. Cash box bags are deposited in cash box and cash box comes to the cash office. It is opened, it is counted, the vouchers are acknowledged, then it is sent to the accounts office along with the CR note and the acknowledged copy is sent back to the station master for posting in the balance sheet. At the time of cash office counting, if there are any short remittances, मतलब क्या है, लघु प्रेक्षक, मतलब कम अमाउंट पाया गया काउंटिंग के जब, या किसी कॉइन्स का कुछ एनी प्रॉब्लम इज देयर विद द कॉइन्स और द नोट्स, इफ देयर इज एनी क्या बोलते हैं, एनी फेक नोट्स और एनी फेक कॉइन्स जो आ गया, फोर्ज नोट्स आ गया, गलती से दूसरा कुछ हो गया, तो ऑल दोस थिंग्स कैश ऑफिस क्या करेंगे, दे विल चेक एट द टाइम ऑफ काउंटिंग द कैश इफ देयर इज एनी what you call any fake notes or any forged notes, anything is received, they will do is they will treat it as short remittance. माना कि अभी एक स्टेशन ने 1000 रुपया का सीआर नोट पे लिख दिया, at the time of counting only 900 is the valid cash and other 100 rupees is disallowed by the cashier because these notes are either forged or they are less remitted. 1000 तो रहना चाहिए सीआर नोट में, लेकिन कैश काउंट करेंगे तो 950, suppose it is 950, then 50 rupees is treated as short remittance. All these discrepancies are noticed. All these discrepancies are noticed at the time of counting the cash from the cash bags. So this is one type of station outstanding. This is the class A of station outstanding, and it forms a part of the station outstanding. So class A के बारे में हमने we have discussed. So what is this? Forged coins, short remittance, cash received from station is served out with cash and cash remittance note is issued. The correct cash whatever is counted is acknowledged and the remaining will become a part of the suspense. जो disallowed किया गया cash office में, that will form a part of this संदेही खाता का एक भाग बनेगा। वो कहाँ पर बनेगा, स्टेशन बकाया के क्लास ए आउटस्टैंडिंग में बनेगा। This becomes the class A outstanding. Okay. Now having discussed this class A, now we will go to the class B outstanding. So class B outstanding, what is class B outstanding? Class B outstanding is nothing but the class A में second half, मतलब first कक्षा हो गया class A में station outstanding में, second में class B station outstanding में accounts office balance sheet. What is accounts office balance sheet? Accounts office debits, sorry, not accounts office balance sheet, accounts office.
when a mistake involving apparent financial loss to the railway is noticed during the course of internal check, कुछ गलतियां स्पष्ट वित्तीय नुकसान जो रेलवे को हो गया था, इसमें अंदरूनी जांच में मतलब आंतरिक जांच में जो हो गया था, एंड अमाउंट दैट इज कलेक्टेड शॉर्ट, कम जमा की गई राशि, एंड अंडर चार्जेस मतलब कम दाम लेना, और अनअकाउंटेड पे कुछ हिसाब नहीं सर जो कम अकाउंट हिसाब किया गया, दैट इज डेबिटेड अगेंस्ट द स्टेशन कंसर्न थ्रू एन एरर शीट। ये हम क्या करेंगे, हम अकाउंट्स ऑफिस डेबिट जो है अकाउंट्स में हम चेक करेंगे तो कुछ गलती प्राप्त हो गया, हमें मिल गया जो रेलवे को नुकसान पहुंचा, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी फाइनेंशियल लॉस दैट इज नोटिस्ड ड्यूरिंग इंटरनल चेक, मतलब आंतरिक जांच में जब इसका चेक हुआ तो उसका कम कलेक्शन और एनी अंडर चार्ज मतलब ज्यादा लेने के पैसे में हम कम ले लिया, कम दाम लेना या अनअकाउंटेड इसका अकाउंट में नहीं लाया गया, तो ऑल इज डेबिटेड अगेंस्ट द स्टेशन कंसर्न थ्रू एन एरर शीट। हम कैसे करेंगे इसको, एक हम एरर शीट के माध्यम इसको हम वी विल डेबिट इट, दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द अकाउंट्स ऑफिस डेबिट। सो ये हो गई हमको पहला स्टेशन बकाया, दो तरह, अगेन हम इसको रिवाइज करेंगे, दो तरह की होगी। ये जो है स्टेशन आउटस्टैंडिंग कंप्राइज ऑफ कैश ऑफिस डिसअलाउंसेस एंड अकाउंट्स ऑफिस डेबिट्स। अकाउंट्स ऑफिस में इंटरनल चेक में व्हाट एवर वी गेट, वी आर कलेक्टेड एनी short accounted under charges or unaccounted is debited against the station through an error sheet. Error sheet में क्या होगा, whatever is that you will communicate to the station telling that instead of collecting this much amount you have collected only so much amount, so you have to make good the debit that is raised upon it. This is the first type of traffic suspense under station outstanding. Okay, now we will move to the second. What is second? Second will be the freight of goods parcel or hand remaining undelivered but invoices not taken into account. इसका मतलब what is इसका मतलब जो क्या हो गया, हमको माल पहला डिलीवर नहीं हुआ लेकिन उसके इनवॉइस जो है बनती है उसको हमने हिसाब में ले लिया, बट दैट इज नॉट goods are not undelivered to us. That means it is not reached, but invoice are taken into account. So this is one type of outstanding. Second type of outstanding is what, freight of goods parcel not on hand, but invoice को हिसाब में लिया लेकिन goods को हमारे पास नहीं पहुंचा. So this will normally happen during the last 2-3 days of the month. कभी ऐसा हो सकता है invoice बन जाती है, माल नहीं आता goods sheet को, कभी माल आ जाती है तो invoice नहीं बनता. So इसके वजह से क्या करेंगे, because station has to close the balance sheet in time, it has to invariably take into account whatever is available with us. As a result, this will be short. So this will be shown in the station outstanding. Next will be the overcharge sheets in the commercial for certification. किसी गलती से हमको स्पेशल क्रेडिट्स देने का है स्टेशन के लिए, तो एक ओवरचार्ज शीट से हम कमर्शियल डिपार्टमेंट से हमको मिलेगा. टू दैट एक्सटेंट whatever is their outstanding is there in that, उसमें जो संदेही खाता में है उसको हम निकालने के लिए स्पेशल क्रेडिट एडवाइस हमको मिलेगा कमर्शियल डिपार्टमेंट से. सो उसी को भी हम इसमें इसके अंदर हम लेंगे. वॉरफेज डैमेज, पिछले बार हम वॉरफेज और डैमेज के बारे में डिस्कस किया था. ग्राउंड रेंट जो होता है वॉरफेज है, डैमेज जो है लोडिंग या अनलोडिंग के टाइम में either by the consignor or by the consignee at the originating station or at the destination station beyond the free time. If you are taking more time to load or unload, then damage charges will be excess. All those things also will form, if they are contesting, then it will form a part of your outstanding class B outstanding fee. And any siding charges, admitted debit, जो डेबिट जो है स्वीकार किया गया, जो डिस्प्यूटेड डेबिट जो अस्वीकार किया गया, और मिसलेनियस अन्य. So this will form a part of the station outstandings. Now we will discuss what is admitted debit and disputed debit. हम error sheet से क्या करेंगे, स्टेशन को हम we will communicate to the station telling that these are the disputes that are occurring in your station regarding the short collection of the amount. So what they will do, station master immediately on receiving the error sheet, he will take that amount into the debit side of his balance sheet first. First instance, he has to account the error sheet. Then what he will do is he will examine the error sheet. Then he says that on examination, if he says this is correct, that what accounts office people have raised, accounts office ने लेगा
ऑफिस ने जो रेज किया है डेबिट उसको ही इज एक्सेप्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज द एडमिटेड डेबिट, मतलब इसको गलती को उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो ये होता है स्वीकार की गई डेबिट। सो दिस यू विल कीप इट एंड यू विल आल्सो आइडेंटिफाई द स्टाफ, कौन किसने गलती किया उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, और जो रेलवे को जो नुकसान पहुंचा उसको रिकवरी जो है उसका वो इफेक्ट करेंगे, ये होता है एडमिटेड डेबिट। Second will be the disputed debit. If the station master after examining the debit objects, ये जो गलती वो नहीं माना स्टेशन मास्टर, मतलब ये जो गलती हुआ this is because on account of non accepting, because ये हम I am not accepting the debit raised by accounts department, उन्होंने बोल दिया, तो क्या करेंगे उसको, he will examine all the debit and he will say that this debit raised against me is not correct, then he will keep it as under the disputed debit under the station outstanding. So what he will say, this disputed debit is not acceptable to me. So this is called अस्वीकार debit. So इसमें क्या करेंगे, इसको accounts office या TAA जो लाइन पे जाते हैं, that they will verify with the record and they find that the debit is incorrect, raised on the station is incorrect based on the documents and other records produced by the station master. If it is found valid, देन एरर शीट द्वारा जो डेबिट रेज की गई उसको डीए को पूरा अथॉरिटी है उसको विथड्रॉ करने की, सो वो क्या करेंगे, एक क्रेडिट एडवाइस उनको दे करके वो डेबिट उनको निकालेंगे। ये जो है दिस इज अबाउट द एडमिटेड डेबिट एंड द डिस्प्यूटेड डेबिट। दिस इज वन साइड। नाउ वी आर कंप्लीटेड द स्टेशन आउटस्टैंडिंग, स्टेशन बकाया हमने खत्म कर लिया। एंड इसका डिस्पोजल कैसा होगा, स्टेशन डिस्पोजल, मतलब ये रिकवरी जो इफेक्ट होगा, अगर एडमिटेड डेबिट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको सैलरी पेमेंट तनख्वाह द्वारा स्टाफ जो भी गलती किया उसको तनख्वाह द्वारा हम रिकवर करेंगे। लमसम पेमेंट क्या होता है, एक मुश्त रकम, मतलब एक साथ उसको हम पेमेंट करने की कोशिश करें, चाहे व्हाट एवर इज शॉर्ट रिकवरी इज देयर दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन रेस्पॉन्सिबल। डिस्प्यूटेड डेबिट क्या करेंगे, जो अस्वीकार की गई डेबिट को हम क्लियर करेंगे, क्रेडिट एडवाइस नोट, विशेष क्रेडिट एडवाइस देंगे ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस, वो एक मार्ग है जो इसको डिस्प्यूटेड डेबिट को बैलेंस शीट से निकाल देने का, मतलब सस्पेंस से क्लियर करने का, और जो है वेवर मतलब त्याग दे देना वो अमाउंट को, राइट ऑफ दे देना मतलब खरीज कराना उसको एक साथ निकाल देना, एक पूरा जो है these are the various types how by which we can reduce our outstanding। इसका जो एडमिटेड डेबिट का सैलरी पेमेंट या लमसम पेमेंट, डिस्प्यूटेड डेबिट जो है क्लियरेंस बाय स्पेशल एडवाइस, देन वेवर, देन राइट ऑफ डेबिट, these are the things by which we can dispose of this station outstanding under admitted and disputed debit। Somebody said it is not audible, so is it audible please? Is it audible please? Is it audible? Yes, sir, audible. Thank you, thank you. Okay. Now we will go into the second type. Second type consists of accounts office balance sheet. In the second component of the traffic suspense is accounts office. What is this accounts office balance sheet will comprise of? It comprises of unrealized carriage bills against the pay and accounts office. ये carriage bills जो क्या होता है? These are all the various vouchers, various warrants that are sent along with the CR note to the accounts office for accountant. This is warrants or any concession vouchers that is issued by various state government or central government in the form of vouchers. These vouchers will be exchanged in lieu of cash. कैश के बदले में वोचर्स देंगे, जैसा हमारा पीपीओ है उसके हिसाब से दिस आल्सो विल बी सेंट बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इशू की गई ये जो है वारंट है। क्या क्या वारंट हो सकता है, ये सीआरपीएफ जवान के वारंट हो सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वारंट हो सकते हैं, सीएएसएफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स का हो सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो सकता है। All these things will be issued by the, like that many vouchers for concession vouchers will be issued by the central government,
एंड स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा इश्यू की गई क्या है पुलिस वारंट्स एंड डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा रक्षा मंत्रालय द्वारा इश्यू की मिलिट्री वारंट्स, ये जो है कंसेशन वाउचर्स बनते हैं। तो ये क्या होगा, दिस विल बी एक्सचेंज इन लिeu ऑफ कैश, मतलब इस कैश विल बी not be paid, but we have to realize the warrant to which the amount pertains. So how we will do it? इसका हम हिसाब करेंगे और whatever is the amount that is there, we will keep it the vouchers pending. We will check all the vouchers, we'll analyze it the government wise, and then we will bill it against the respective government. Till such time the vouchers are kept pending in a suspense account called accounts office balance sheet suspense. So this we will keep it. And once the government accepts, when the central government accepts, then clearance, based on the advice of clearance, we can take out or clear our suspense. Till such time we received advice of clearance, this is kept in the suspense account. Likewise, even P&AO suspense for central government and also for state government we have AG suspense. These two will be operated, and for defense department we operate M remittance transactions, section में हम करेंगे. All these AOB balance are adjusted through inter-government adjustment advice. This is how we clear this AOB. Till such time we have not received the advice, these amount will be kept in the suspense called the accounts office balance sheet suspense. This forms the second component of the traffic suspense. Okay. PW money, police warrants. That is what police warrant. Okay, this will be a concession order. Then what else? Who has asked one more question? Let me see. Okay, right. Okay. Now we'll go with the third component of the suspense. Third component of the suspense will be traffic suspense will be cash in transit. इसको हम हिंदी में बोलेंगे मार्गस्थ रोकड़. जो कैश जो कलेक्ट होता है, it is transmitted to the cash office through cash chest. To traffic cash office for remittance into the bank and its accountant. इसको accountant के लिए हम क्या करेंगे, traffic cash chest द्वारा हम स्टेशन से traffic cash office को हम भेजेंगे. If the cash is not received and the cash available in chest is not account, cash chest अगर स्टेशन को नहीं पहुंचा या उस cash chest का जो हिसाब नहीं हुआ, वो ट्रैफिक बुक के कैश इन ट्रैफिक में हम वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. So इसका हम डेफिनेशन क्या है देखेंगे. Station take credit in their balance sheet, irrespective of the fact whether the cash is acknowledged by the cash office or not. Stations क्या करेंगे, उनका तो monthly target होगा कि 31st के दिन और 30th के दिन they have to close their balance sheet. So whether cash office अगर acknowledge करके आएंगे तो cash balance sheet में उसका posting लेंगे. अगर cash office से acknowledge हुआ भी नहीं, तो फिर भी वो क्या करेंगे, balance sheet को समय के अनुसार close करने के लिए to close it in time, they will take it in their balance sheet in order to close the balance. Such a cash for which credit is taken by the station master is called the cash in transit. मतलब इसका acknowledgement जो है, it comes थोड़ा लेट से आएगा, फिर भी अपना बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए, क्योंकि ये स्टेशन बैलेंस शीट जो है स्टेशन मास्टर का पर्सनल अकाउंट बनता है, तो उसको रिस्पांसिबिलिटी है कि मंथ के एंड में उसको क्लोज करना है. सो when he tries to close it, he will take credit for which he is not received any acknowledgement. So he will take credit. Such a cash for which credit is taken by the station master is called the cash in transit. So ये cash in transit हम क्या करेंगे, every month इसको हम minimal balance में रखना चाहिए. और दूसरा at the end of the financial year जो है cash in transit को हम जीरो करना है. तो हमको तो 2-3 दिन का टाइम मिलेगा ना मार्च अकाउंट क्लोज करने का. वो टाइम में हम क्या करेंगे, हम उसको चेस करके कैश इन ट्रांसिट को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे दूसरा ईयर के लिए, उसको हम उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको हम जीरो कर देंगे. सो कैश इन ट्रांसिट विल बी मेड nil. So all the cash that is due to the right way will be accounted in the same month. So in the same year, financial year, it will not be carried forward to the next year. Okay, this forms the third component of the traffic suspense. Now we will discuss the fourth. What is fourth? In the fourth aspect will be the how it is, how this thing will be. One thing. How this will be cleared. First three belongs to the station. Timely review with the executive. हम executive के साथ हम क्या करेंगे, इसको timely समीक्षा करेंगे.
हमारे जो कर्मचारी जो ट्रैफिक में काम करेंगे उनको प्रशिक्षण देंगे, उनको स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे। और कैशबैक मूवमेंट कैसा है और उसका एक बार उसके ऊपर हम नजर रखेंगे क्या, क्योंकि कैशबैक सही वक्त पर वो स्टेशन पहुंचे और उसका अमाउंट का जो हिसाब हम बराबर उसको हम लेंगे। फिक्सिंग ऑफ स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो होता है स्टाफ में गलती होने से स्टाफ को जिम्मेदारी ठहराएंगे। अगर गलतियां के ऊपर गलतियां हो तो हम स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करेंगे। टाइमली रेजिंग ऑफ कैरेज बिल्स, ये कैरेज बिल्स जो बनता है पिछले हम डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में, जो पुलिस वारंट और जो है बाकी जवानों का वोचर, मिलिट्री का वोचर जो बनता है उसको हम क्या करेंगे टाइमली, मतलब समय के अनुसार उस कैरेज बिल को हम बिल रेज करेंगे गवर्नमेंट के हिसाब से, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या हमको ये डिफेंस डिपार्टमेंट मतलब रक्षा मंत्रालय को, इसके ऊपर हम उसको टाइमली समय के अनुसार बिल्स रेज करेंगे। और थorough चेकिंग बिफोर रेजिंग ऑफ बिल्स, ये बिल्स रेज करने के पहले हम उसको चेक करेंगे ताकि हम कुछ अमाउंट या कुछ जो हमको मिलना है जैसे उसको हम उसका न छूट न जाए, हमारे हिसाब से उसको छूट न जाए, सो उसका भी हम प्रॉपर चेकिंग करेंगे। ये क्लियरेंस इस वजह से हम थोड़ा इसको थोड़ा मेहनत करके किए तो ये जो हमने डिस्कस किया था इसको हम अगर इसको ये नियमों को पालन करें तो ये जो है हमारे यातायात की संदेही खाता को हम इस तरह से हम कम कर सकते हैं, मतलब अमाउंट भी करेक्ट रहेगा, ये जो है हमने डिस्कस किया था इसका भी हम केयर सही तरह से लेंगे। सो ये हो गया इसका हम रिव्यू। हम नेक्स्ट जाएंगे, हम जो है डिस्कस करेंगे डिमांड्स रिकवरेबल के बारे में। ये डिमांड्स रिकवरेबल चीज जो है ट्रैफिक अर्निंग का एक भाग बनता है, लेकिन दिस सब्जेक्ट इज डेल्ट एट डिवीजन लेवल, दिस इज टुवर्ड्स द डिवीजन लेवल। इसका क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है लीज ऑफ लैंड बिल्डिंग किसी डिफेंस या अन्य डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया, इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ साइटिंग्स, और जो होता है लैंड एंड बिल्डिंग्स, लीज ऑफ लैंड, इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस, रेंट ऑन बिल्डिंग्स, किसी रेंट या किसी बिल्डिंग का दिया, ऑल दोस थिंग्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्याज, और इसका जो इंटरेस्ट मेंटेनेंस मतलब ब्याज और उसका रखरखाव, उसका जो है मेंटेनेंस चार्ज लगता है, ये जो है 1488 में लागू हुआ है। ये डिमांड्स रिकवरेबल जो है ये लिंक हेड के द्वारा कमर्शियल अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंट को लिंक करेगा। तो ये डिवीजन सब्जेक्ट है, अक्सर ये डिवीजन में बिल्स रिकवरेबल सेक्शन जो होती है वो इसका दे विल टेक केयर ऑफ दिस डिमांड्स रिकवरेबल। सो डिमांड्स रिकवरेबल में फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहला किसी या पार्टी हो तो उसको हम पहला उसको बिल जो है we will raise bill on them during the month of April or May or whenever it is convenient within the first 2 months of the financial year, we will raise a bill. So at the time of raising bills to the party concerned, whether it may be a siding owner or it may be a person who is occupying the railway building or any lease or license of land let down to any other party. So what we will do at the first instance, what we will do is we will debit the demands recoverable and we will create the abstract Z earnings को हम create दे देंगे. So demands recoverable, this amount is kept pending and we will wait and watch for the recovery. इसका जो recover होने तक amount जो वहां से आने तक हम इसको demands recoverable suspense में हम रखेंगे, करके क्या करेंगे इसको वॉच करेंगे। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी विल गेट सम अमाउंट रियलाइज्ड, एट दैट टाइम वी विल क्रिएट डिमांड्स रिकवरेबल बाय डेबिट टू रेमिटेंस इनटू बैंक, रेमिटेंस इनटू बैंक का हेड ऑपरेट करेंगे और डिमांड्स रिकवरेबल को हम क्लियर करेंगे। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्रैफिक सस्पेंस। सो डिमांड्स रिकवरेबल जो आइटम बनती है डिवीजन का है एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द accounts to see that demands recoverable also is kept at the barest minimum so that your traffic suspense will not increase. So यातायात की कमाई का जो संदेही खाता भी इसकी वजह से इंक्रीज ना हो, तो इसका भी हमको टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट के हिसाब से हम we have to clear it on an annual basis. Whatever is the priority has to be given and we have to clear this demands recoverable item. One aspect. Then what is the next?
डिमांड्स रिकवरेबल एग्जांपल्स क्या आता है उसका, जो क्या क्या अंदर डिमांड्स रिकवरेबल में आता है। लैंड रेंट चार्जेस फॉर इंजीनियरिंग प्लॉट्स जो होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कब्जे में जो लैंड है उसका रेंट है। कमर्शियल उसका जो लीज है, और कमर्शियल प्लॉट्स जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट के कब्जे में जो है, that is there, it is under the control of commercial department, all those rent for all those lands. Then interest and maintenance and inspection charges of sidings, rent on buildings, and maintenance charges of ROBs, FOBs and level crossing, whatever is there, the maintenance charges. These are all the form part of the demands recoverable item. जो है what forms the part of sundry earnings of that, अगर demands recoverable clear हो गया तो abstract is को credit मिलेगा। तो this will result in better operating efficiency, and this demands recoverable is a link to the commercial account. So this will share this slide with you. Next. Then while discussing demands recoverable, we also come into certain bills recoverable items that also for academic interest we will discuss this bills recoverable also. Bills recoverable will bring it upon all dues pertaining to water charges, electricity charges, staff charges, AMC of LC gates, platform stalls, conservancy charges, whatever, all those things form part of the bills recoverable items. When the amounts are due to the railways, it's a pass for payment. It is only directly it is debited to the concerned revenue heads by credit to the cash checks and bills. So what happens? It is only a what against it is absorbed against the revenue demands. So what happens? The state will go to the revenue demands. It is not a form part of the earnings and it will be cleared in the same. So bills recoverable is generally a item that is kept outside the traffic suspense. For interest sake, we are discussing, but let us not touch so much on the bills recoverable. These are the items of the traffic suspense. Next slide. So for how to discuss bills recoverable, there are no separate bills. Cost of commercial staff and other staffs are who are deputed to earning. These are the examples. हमने कुछ उदाहरण दिया है. Maintenance, wagon repair charges, water bills, electricity bills, they are not part of the sundry earnings. And this recovery from party reduces the expenditure in the demands. अपना revenue demands का expenditure कम करेगा at the same time, and this is already accounted in books. Clearance under demands recoverable leads to the reduction in revenue demand. Thus, results in the improving operating ratio, and it is not a linked. So this is not a linked. That is how we understand demands bills recovered. Okay. So I think we have almost come to the end of the session. Now, you have got any doubts? No, sir, can I launch a poll? We'll launch the poll, sir. 1 second. On MCQ, no? Now MCQ we have got launch. Yes, please launch the poll. Okay, sir. Yeah, please submit the answers. Time limit is 5 minutes. Please choose the answers. Sir, it is visible now? It is visible, sir. Okay, sir. In the meantime, any queries, please raise the hand. Faculty will address. Any queries on the topic, please raise your hands. Somebody asked why demands recoverable to abstract debt, because it is earning. It is not either coaching earning or passenger earning or goods earning. So these are miscellaneous earnings that will comprise of sundry earnings. So it has to go to abstract Z. That's why demands recoverable is also one sort of earnings. It is not generated from earning of passengers, other coaching or goods. So that is why it has to go to abstract Z. Participants, you can message your queries in the chat box also by addressing Ghost.
or you can raise the hand. I will unmute. Bills, these are military bills that is normally taken under AOB, bills spending from goods or military bills. If it is pertaining to defense transaction, then it is to be billed to the respective ministries. So it can be either a defense bill, or it can be any state government, or it can be any central government bills. This is the taken in the accounts office balance sheet as outstanding, and will be cleared after raising the amount. Yeah, any more queries? పైన సాధన కరండి కొద్దిగా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే గైడ్ చేయి అయిపోగానే క్లోజ్ చేస్తాం. ఒక్క నిమిషం మీరు పోల్ సబ్మిట్ చేయండి. అవును 4 ఆన్సర్స్ ఒకటి చూస్ చేయండి. Rispita Gupta, please unmute. Sir, good afternoon. Good afternoon, please. Go ahead. Sir, traffic suspense is the part of traffic book. Traffic, it is emerging from traffic book. On traffic book, what we try to do is, after realizing all the earnings, there will be some earnings which will be accrued, but it will not be realized. Due to these reasons which we described, in that what all we have discussed in this, there are certain amount of earnings that we accrued but not realized. But it is likely to happen in the near future. It may either happen in this month, or it may happen in the next month, or it may happen after 2-3 months. This time, it is kept in a suspense set for traffic suspense set, and it is after the traffic book for the month of close, whatever unrealized amount is there will be kept in this suspense. If you have invariably traffic suspense will form a part, to some extent it will form a part of the traffic, the product of the traffic. Okay, thank you, sir. What is the meaning of gross traffic receipt? They said if you add gross earnings to suspense, then it is gross traffic receipts. Yeah, next. Mr. Satish, please unmute. Satish Sahu, please unmute. Hello. Please tell. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yeah. Sir, account to adjust, it's also part of the traffic suspense? Pardon me, I am not able to get it. Sir, account to adjust. Account adjust. What? Account to adjust, sir. Samayojana Lekh Khate. How to adjust? It is also it is also part of the traffic suspense, sir. Yes or no? Sir, he is asking account to adjust is part of traffic suspense or not? Adjust. Accounts office balance sheet. Account to adjust. No. Okay, sir. Whatever component I discussed only will be part of the traffic suspense. Sir, one more query in the chat box. What is the difference between demands recoverable and bills recoverable? Demands recoverable Ramachandra in the item that is to be linked between the government account and the commercial account, for which the realization of the earnings is on the capitalized item, whereas bills recoverable is only a normal recovery like water and rent charges.
So it is not capitalized, it is a revenue, it is recurring every month, whereas these are generated from the assets what we are having, like land, buildings, then sidings and whatever interest and maintenance on sidings, all those things that are realized on a regular basis. So those are all demands recoverable items and will be realized year after year. Whereas these are other bills recoverable items are very temporary in nature, but it is not recurring like your demands recoverable. Demand recoverable every time will give fixed return every year. That is the difference. Yeah, next Mr. RB 8365, please unmute. Yeah, please tell me. Okay. Any more queries? Or you can message queries in the chat box. Yeah, Mr. K. Gupta, Just raise please hand. unmute. Sir, what is M remittance, sir? M remittance is a suspense account that is maintained to deal with the defense and postal accounts by the railways. So whenever there is any amount to be raised, what we will do is first we will create the earnings and we will debit M remittance. Then after receiving pink advice, these are usually done through book adjustments. Once we receive these pink advice from RBI, what happens? M remittance will be created when our railway head will be debited, like that. Okay. M remittance is operated for dealing with the transaction between postal and defense department. Somebody asked difference between account general and PO suspense. PO suspense is we deal with transaction with central ministries, and AG suspense we deal with transaction with the state governments. Both are employed for clearing our debits. Can we discuss the poll, sir? No. Sir, only 71% people has posted. We'll wait 1 or 2 minutes, sir, because those who are logging from mobile, they can't submit the answers, sir. Okay. We'll wait 1 or 2 minutes, then we'll end. Right, sir. Okay. I'm waiting. I'm checking. Yeah, Debashish Pramanik, please unmute. Sir, what is sir other coaching and other goods earning, sir? Other goods. Goods is only one goods. Other goods nahi hai. Other coaching is which is not from passengers, like parcels, luggages, clerkage charges, cancellation charges. All those things form part of other coaching, which is not from passengers. Other coaching. There is no other goods earnings nahi hai. Goods earnings is only one. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, can I end the poll? No? Yes, sir. If Yes. it is, everybody has given. Okay. Sir, now to share to the participants, sir. Okay, sir. First question, what I asked why you put the MCQ is traffic suspense consists of. So around 91% people got correct. So traffic suspense consists of cash in transit, AOB, and station outstanding. So all three are correct. So D is the correct answer. Right. Now second is traffic suspense is defined. How it is defined? Now it is difference between the GTR and the gross traffic receipt and GE. That is gross earnings. So 86 people got correct. Others who are not got correct may please update their answers and they may stick to A. That is, it is difference between the gross traffic receipts and the gross earnings. Third MCQ is station outstanding consists of how many parts? So we put
A and B, almost 89% people got correct. So both A and B is correct. Others who have given incorrect may please take correct themselves. Fourth will be gross earnings represents what? Gross earning represents coaching, goods and sundry. All of the above earnings is correct. So 97 people got correct. So others who have got incorrect may please correct it from the others. Demands recoverable consists of IM&M charges, rent on building, lease and licensing of all of the above. 90% people got correct. So that is very good. All of you have got correct. So those who are not answered correctly may please correct it from others. Demands recoverable suspense is maintained in what? So division accounts, headquarters accounts, stores accounts, workshop accounts. So the correct answer is division accounts. So 74% people got correct. Others who are given headquarters may please correct it. Demands recoverable suspense is always maintained in the division accounts. Traffic suspense is what? Credit balance, debit balance, both A and B, none of the above. So answer 55% got debit balance is correct. So it represents all accrued earnings not realized. So it is always a debit balance. So those who answer credit balance, you please correct your answers and you take it as debit balance. Cash in transit is dash, brought forward, carried forward, nil. So the correct answer is nil at the end of the financial year. So already we have discussed a मार्गस्थ रोकड़ जो है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग खत्म होने के जब इसका हम पूरा क्लियरेंस होना चाहिए, इसे इट बी nil. So 45% people got correct. Other who have said brought forward, carried forward, may please correct, and it is to be nil at the end of the financial year. Number 9, demands recoverable is what? Link head, revenue suspense head, capital suspense head, none of the above. So link head is correct. 46% people got correct. Other who said revenue suspense head, may please correct. It is a link head between the government and the commercial account. So please correct that. Those who have got incorrect. Number 10, billable vouchers fall into which category? Station outstanding, AOB, cash in transit, none of the above. So 49% people got correct. AOB bills, billable vouchers will fall into accounts office balance sheet. It is not form of part of station outstanding or cash in transit. Those who have got incorrect, may please correct it. And finally, anything is there? Nageshwar, I have discussed this MCQs. Total feedback has to be. Sir, just a minute. Okay. I'm taking. Please submit the feedback on today's session. Any more queries from the participants on the MCQ or the topic? Somebody asked what is carriage bill. Carriage bills are nothing but concession vouchers which are sent in the form of police warrants, military warrants, BSF bills. All those things are called carriage bills. Station balance sheet, whatever cash rises from the station is station, and accounts balance office balance sheet is prepared at accounts balance sheet with all the vouchers inclusive. So all those things will is nothing but AOB. This is a difference. How to reduce traffic suspense money? We have already discussed. We have to raise the bills in time. We should see that cash in transit should be the barest minimum and it should be cleared as early as possible. Station outstanding, we have to contact with the commercial people and also with the station people to see that they interpret the rules correctly and they don't leave any gap in correcting the revenues from the parties. So that is how we can reduce the traffic suspense. So we have to take all measures. What measures we have taken, I have already discussed in the slide. We should have periodical meetings, and by that we can reduce the traffic suspense. PPT also shared in the chat box. Any queries on the MCQ or topic? Okay, the session is completed, sir. Yes, sir. Session is completed. No more queries. One chat is there. Yes, sir. On behalf of the Academy, I thank Sri K.K. Subramani for taking up session on traffic suspense
He also interacted with the participants and clarified all the doubts. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Tomorrow we have session on journey of a rupee from booking office to RBI. And the speaker will be Shri M. Nageshwar Rao. Login time is 2:45 and session starts at 3 o'clock. Thank you all. Thank you so much. Thank you all participants.